Okay. So am I audible? Voice ta सुखा जाउची समस्त? Yes, sir. Sir, good morning. हाँ, good morning. नमस्कार. ये all of you are able to hear ना? कारण आज मोर ये mic टा नहीं. So एटा मु से default laptop रे ये record करची. So ठीक अछि. So any doubts you have till section 7 which we had completed yesterday? ए जो स्लाइड्स गुड़ा मु यूज करी नोट्स करिका एगुड़ा ऑलरेडी आपनकर अच्छी ऐप रे ठीक अछि तो ऐप रे आपण डायरेक्टली जाई भी एटा देखि परिबे राइट दिस वी हैव ऑलरेडी completed up to section I guess section 6 हमर सर थला एटा काली हम एटा करथि Section 6 ର illustrations ପୁରା ସରିଥିଲା 7 start କରିବାର ଅଛି ଆଜି 7 start हबन ना एटा भी आपण देखि दे परे एगुड़ा एथरे देछि तार what are the important maxims section 6 को लेके this is the maxim related maxim okay anyway so now come to section 7 the first के bare act रो देखि दबा कौन से कोची then we will go to the discussion okay facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened or show the relation of parties by whom such fact was transacted are relevant in as so far as they are necessary for that purpose. Okay, तामाने कोन ना एठी relevancy of facts under रे section 7 under रे okay आउ भी केतेटा conditions दउची जोठी की facts करिका आपण को relevant रहबो okay so explain or introduce a fact in issue or relevant fact एटा सब गोटे गोटे नंबरिंग कर देबे so this is number 1 okay explain or introduce a fact in issue FII हमें कोई पर ठीक है एटा हला point number 1 so if you want to write you can write it or you can write it later okay जेमति भी एबे बुझी जानतु okay so key elements रे जोटी देइची you can see here to explain or introduce a fact in issue FII जोटा or relevant fact एटा हला number 1 तार objective okay or second रे कहला support or rebut so explain or introduce a fact in issue or relevant fact माने okay तो जो fact गोटे fact in issue को relevant fact को introduce करूछ प्रथम थर पे okay or already introduced ताको explain करूछ और भलो रे बुझौछ तो सेटा 7 under रे जाउछ okay so any fact which is necessary to explain or necessary to introduce a fact in issue or relevant fact it hala point 1 first element of section 7 second element कहला which support or rebut an inference suggested by fact in issue or relevant fact suppose ଗୋଟେ relevant fact कहूची कि से murder weapon टा ये किनी थिला दुकान रो right तापरे a fact which will support or rebut okay that particular relevant fact so suppose say time रे लोक नथिला से आउ कोडी थिला okay तो एई कैटेगरी सेटा जीवो सेटा हला भाई एस्टैब्लिश कर देछि okay it has rebut okay inference suggested by relevant fact was suggesting that okay for example कि ये किनीची okay let's say there is he has bought something right but then he proves it that I was not there at that time ठीक अछि so it has second year रे गला तो second key element आपन कर देखिबे either support or rebut okay
any fact in issue or any relevant fact. Okay, support or rebut जोटा कि second टा. Okay, third है establish the identity of anything. Okay, identity of anything माने कौन? To establish the identity of anything, that means basically गोटे जिनस, okay, of anything coach, okay, or person whose identity is relevant. कौनसी जिनस, let's say गोटे गोटे कौन गोटे पढ़िथिला तो सेथरे जणा पड़ला कि एटा एक्चुअली मर्डर वेपन टा, एटा मर्डर रे यूज होइछ. ओके, तो सेटा भी रेलेवेंट हबो. और गोटे लोक से देखि जे मर्डर टाको ताको आइडेंटिफाई कराउछ आई विटनेस को, लेट्स से फॉर एग्जांपल. ओके, सो दैट इज आल्सो रेलेवेंट कारण से देखि जे ताको पचराई परियो. ओके, सो ईदर एनीथिंग और एनी पर्सन. ओके, तो सेटा हला थर्ड एलिमेंट रहउची सेक्शन 7 रो, एस्टैब्लिश आइडेंटिटी. ओके, कार आइडेंटिटी ईदर ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन. ओके, जार आइडेंटिटी जानिबा रेलेवेंट, से जिनस रहू कि से लोक रहू. सेटा हला थर्ड कंपोनेंट ऑफ सेक्शन 7. फोर्थ कंपोनेंट हला फिक्स द टाइम और प्लेस एट व्हिच एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड. ठीक अछि, और मर्डर हिच फैक्ट इन इश्यूटा कोन, ए मारिछि कि नहीं बी को. ठीक अछि, सो को जगह रे क्राइम सीन टा, को जगह रे मर्डर टा हिची, राइट. So if any fact is going to fix the time and the place, okay, এই যে এই এক্সাম্পলটা जो নউଛୁ সে মর্ডার, তাহলে সেই ফ্যাক্টটা भी relevant হবো. ওকে, সেটা সেকশন 7 র fourth component, fix a time or place, okay, where that particular event had occurred. Okay, our last hela to show or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted. Okay, जो parties से सब, let's say कि काको मारिछि कि कौन देखिछि. Okay, so how are they related to the case? ठीक अछि, so जो कहूछि to show the relation of parties by whom any such fact was transacted means how they are related to the case in that way. Okay, see accused अछि, okay, किंबा से accomplice अछि, okay, किंबा से a witness अछि, right. So सेटा हला point number 5, show relation between parties, right, those who are involved in the case, how they are related to the case and how they are related to each other. बुझ परले, suppose जने मर्डर वेपन टा सप्लाई करिछ, तो तारो रिलेशनशिप से ही रहला कि से मर्डर वेपन टा सप्लाई करछ. ओके, सो सेटा हला पांचटा. सो सेटले सेक्शन 7 ऊपर अब किछि क्वेश्चन आसीबो, you have to write point wise these 5 points. These are the 5 things which have been given in section 7. Clear? You may just underline or you may just, I'll just give you 30 seconds, you can just write it down. Key elements, okay, Sir? of section 7. हाँ, Sir, like third element और fifth element रे example देके टिके differentiate करे परिवे की third identity और element रे, relation. identity is who or what. If a गोटे जिनस मिली अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट गोटे मिलिला क्राइम सीन रे पुलिस को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट क्राइम, जेटा कोन जिनसटा दे डोंट नो, हैज इट बीन यूज्ड इन द क्राइम, तो सेटा आइडेंटिफाई करा हला. ओके, देयर इज ए कट, ऑटोप्सी रे जाना पड़ला कि सेटा बेकर गोटे कट अछि, आउ तार जो डायमेंशंस अछि से कट रो सेटा ए जिनस संगे रे ओके मैच करूछ. So maybe this is the murder weapon. सेटा हला identity of that particular thing. जोटा हमें जाननो एटा thing विषय हला. Okay, जोटा point number 3 रे कहउची establish the identity. Okay, of anything or any person. ठीक अछि. So suppose किछटा आई विटनेस करो कहया कथा कि सेठी तीनटा लोक थिले.
जणे जार डेथ है विक्टिम जणे जे मारिची अक्यूज आउ गोटे जे अक्यूज संगे कथा हो कथा होउतला सो नाउ अक्यूज को पचरा होची की थिला तुम संगे से किछ कोन दैट मींस देयर वाज अ थर्ड पर्सन इन द क्राइम सीन ठीक अछि जागु कि आई विटनेस की आउ लोक माने ताको देखि छन हु इज ही से ता सांग से गोटे हायर्ड अकम्प्लिस हु इज ही सेटा हला आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन ओके जोटा कि एटी रेलेवेंट हबो सो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड इन पॉइंट नंबर 3 ओके एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी और व्हाटएवर एटा जो कहला ओके establishes the identity of anything or person okay but obviously that identity of that person or thing has to be relevant to the case okay ରାସ୍ତାରେ ପଥରରେ ପଡିଥିଲା ସେ ପଥର ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ପଥର ପଡୁଛି ସେଇଟା ରେଲିଭେଣ୍ଟ ହବ କି ଅନଲେସ୍ ସେଥିରେ ବ୍ଲଡ ଲାଗିଛି କଣ ହେଇଛି ରେଲିଭେଣ୍ଟ ହବନି ଓକେ ରାସ୍ତାରେ ଗୁପଚୁପ ବାଲାରେ ଯାଉଛି ତାର ଏଇ କ୍ରାଇମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ନା କିଛି ଦେଖିଛି ଓକେ ସୋ ହି ଇଜ ନଟ୍ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ହିୟର तो आपण जो आइडेंटिटी टा बाहर करूचंती इधर गोटे जिनसर आइडेंटिफाई करूचंती कि गोटे लोकर आइडेंटिटी बाहर करूचंती दैट शुड बी रेलेवेंट टू द केस ओके बुझि Yes, परले sir. एटा 3 नाउ कम टू 5 शो रिलेशन बिटवीन पार्टीज राइट सो एटी कोन यू हैव आइडेंटिफाइड द थिंग और द पर्सन here you are saying how that thing or that person is connected to this case okay show the relationship of parties relation of parties by whom such facts were transacted ठीक अछि जो facts सरिका आपण कहउचंती right so let's say he may be accomplice or तार किछि डायरेक्ट रिलेशन अछि कि किछि भी गोटे रिलेशन अछि से इंसिडेंट संगे right so relationship with the incident okay transaction जहाँ भी आपण कहि परिबे माने in simple terms what was his role सी कोन करथिला सी accused अछि किसी गोटे accomplice थिला किसी गोटे bystander थिला relationship with okay respect to the case number 1 second type of relationship with each other हम मुदा को चिन्हि थिली ते accomplice ता सांग थिला accused ओके किबा से तार किछि व्हाटएवर तार भीतर किछि गोटे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप थिबा इति रिलेशनशिप डज नॉट नेसेसरीली मीन योर पर्सनल और ब्लड रिलेशनशिप ओके एठी जो रिलेशनशिप कथा कहूची सेटा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कथा कहूची से ट्रांजैक्शन रे ओके तांको रोल कोन थिला एंड वेयर दे रिलेटेड टू ईच अदर ट्रांजैक्शनली ओके सो you do this for me I will be paying you 1 lakh rupees after the person is dead मर्डर कर दे मुझे एतिक टका दे देबी कि मते हेल्प कर मर्डर रे मुझे एतिक टका दे देबी कुछ करले सो दी प्रकार रिलेशनशिप एथरे को होची पॉइंट नंबर 5 रे गोटे हला व्हाट इज देयर रोल इन द ट्रांजैक्शन सेकंड व्हाट इज द ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कुछ परछन इज इट क्लियर नाउ Yes, sir. It's clear. Thank you, sir. तार तपर गोटे यू कैन टेक क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला दिस इज अ लैंडमार्क केस landmark cases are very important आपण the normal thing is that actually eta कोन होई कि सब cases तो details से कहि होबनी but still then eta you buy that book recent and landmark cases by Samarth Agarwal okay सब वर्ष से तरह नो एडिशन काढुचंती तो recent edition टा किन देबे Amazon Flipkart किबा आपण को लोकल बुक स्टोर रु जोटी भी एबो अवश्य Amazon Flipkart आपण को टिके डिस्काउंट भी अधिक देबे घरे भी आसी पहुंचबो तो सेटा दैट इज मैंडेटरी एवरीवन शुड हैव इट टिके 10 10th सेक्शन सरला परे तापरे रिलेटेड टू द सेक्शंस इंपोर्टेंट लैंडमार्क एंड रिसेंट केस लॉस लैंडमार्क केस लॉस बहिरा हमर मिलजो रिसेंट केस लॉस भी दरकार दिस इज अ लैंडमार्क केस which related to the identity of the accused Queen Empress versus Abdullah 1885 हेला जदि कोठी आंसर लिखिबारे पचरा होउनी के एई केस लो ऊपर लिखंतु देन जस्ट लाइक दिस यू हैव टू गिव द पॉइंट्स
Okay, that in Q Empress versus Abdullah 1885, okay, deals with the identity of the accused. Today ଆମେ section 7 ରେ ଦେଖିଲେ. Okay, here to establish the identity of a person or anything, okay, which is relevant. ठीक ଅଛି, ଏଟା ବି section 7 under ରେ ଯିବ PSA ର. Right. So read it once, paragraph ଟା ଆଉଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, and then let me know if you are unable to understand any part of it. तापर ଆମେ ତାର next part को ଯିବା. ସାର୍ ଏଇଟା TI ପ୍ୟାରେଡ୍ ରେ ଯିବ କି? हाँ, ଆମେ we will go to that part. Okay, test identification कौन, right? एतिकी जहाँ ଆମେ discuss कलु, is that clear? ଯେତିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର just basic meaning ଟା ଆମେ discuss କରି, ସେତିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର clear ଅଛି କି ନାହିଁ? Then we will go to little bit detailed analysis. जोटा कहले test identification parade, okay, or TI parade. जे TI parade रे हुए कौन? Criminal law रे आपण पढ़िबे सेटा. So suppose witness किंबा even victim भी यदि accused को okay identify करिवो, ठीक अछि, तो गोटे लाइन अप करा हबो 10 जनकर लोक ता भितर ताको गोटे गोटे रखा हबो, आउ विटनेस की विक्टिम ताको पचारो एतिकी जनक भितर किए, ओके, जा जो लोक कथा आपण कहउछथि हु इज, कैन यू आइडेंटिफाई, कहबो ए लोक, ठीक अछि. So that is test identification parade, which is very very important in criminal law. काहेकि ना से विक्टिम की विटनेस जीए एटा आइडेंटिफाई करि परनी कि से किए करिछि से क्राइम टा, ताले तार केस टा बहुत वीक हे जो. So this is one of the fundamental steps. Okay, so test identification parade upare direct questions भी पढ़िछि, right? बुझि परले. Okay, before I go to that, आपण मते एतिकी बुझि परछन तो, then now we will go to the Bare Act. Okay, Bare Act को आसंतु एबे. Bare Act रे we will go to the illustration. First illustration टा देखो. मु जो slides गुड़ा यूज करूची, already they are there in your app. Okay, app रे already अच्छी सेटा. जो वीडियो लेक्चर्स फोल्डर अंडर रे जिबे भारतीय साक्ष्य अधिनियम आर वर्ष जोटा अक्टोबर नवंबर रे जो क्लासेस हेतिला से थरे मु यूज करथिली, so that you can, it is already there in your app, you can use it. Okay, आपण कांसेप्ट टा बुझी जानतो तापर निजर नोट्स बनेबे, that is the best, ठीक अछि, rather than depending on a pre-compiled notes of someone else, मोर ही तो और जरो भी तो. Okay, निजे आपण पढिले निजे नोट्स टा बनेबे, जेमती नोट्स बनेबे कहिछि गोटे साइड ब्लैंक छाडी की नोट्स बनेबे, so that आगु जेतले आपण अपडेशन करिवे आपण को प्रॉब्लम होबनी. अपडेशन तो निश्चित होबो, काहे कि ना नुवा केस लॉज आसीबो, किछि नुवा पॉइंट्स आसीबो. सो ऑलवेज जेतले नोट्स बनेबे हमर पेज रो दीटा साइड रहउची ऑब्जर्व और रिवर्स. ऑब्जर्व साइड रे आपण लिखिबे और रिवर्स साइड ता छाड़ देबे, सेटा एई सब काम होय. इंपोर्टेंट पॉइंट्स गोटे दिटा लिखि देबी ता रिलेटेड, किछि गोटे नुवा अपडेट हैला ताकू लिखिबी, ता पई जगह छाडिया पडियो. बुझि परछन. So first illustration ta dekhi daba, then we will go to the concept of TI parade. What are the elements of TI parade? What are the rules of TI parade? TI parade related Supreme Court verdicts kichita hame dekhi. So
First illustration person. The question is whether a given document is the will of A. Okay, the state of A's property and of his family at the date of the alleged will may be relevant facts. Okay, may be relevant facts. ଗୋଟେ document ଅଛି ସେଇଟା will କି A ର. Okay, ତ A ର ଯୋଉ property ସବୁ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ A will ଟା କରାହେଇଛି ଯୋଉ date ରେ ସେତେବେଳେ ତା property ର condition କଣ ଥିଲା? Condition ମାନେ କାହା under ରେ ଥିଲା, କାହା position ରେ ଥିଲା, କିଏ ତାକୁ enjoy କରୁଥିଲା, ଆଉ ତା family ର କଣ ସେ time ରେ ତା family କଣ ଥିଲା. ଯଦି family ହିଁ enjoy କରୁଥିଲା more or less will ରେ ଯାହା ଅଛି maybe ଠିକ ହିଁ ଥିବ. Okay, ଯଦି ଆଉ କିଏ enjoy କରୁଥିଲା, family enjoy କରୁନଥିଲା, then ଗୋଟେ dispute ସେଥିରେ arise ହେଇପାରେ. So these may be relevant facts. May be. Okay, କାହିଁ କହିଲା may be? କାହିଁକି ନା relevant fact ନ ବି ହେଇପାରେ. ସେଟା circumstance ଉପରେ depend କରେ. ଠିକ ଅଛି. ତାପରେ second illustration କୁ ଆସନ୍ତୁ. S use B for libel, imputing disgraceful conduct to A. Right, disgraceful conduct. ଏଇଟାରେ କହିବା କଥା B ମୋ ସାଙ୍ଗରେ disgraceful conduct କରିଛି. B affirms the matter alleged to be libelous is true. ହଁ ମୁଁ କହିଛି କି ଲେଖିଛି ସେଇ କଥାଟା. ଗୋଟେ ଚିଠିରେ କି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଲେଖିଛି. Okay. The position and relation of parties at the time when the libel was published may be relevant fact as introductory to the facts and issue. ठीक है. Position and relation of parties. तो ये दी जनों ଭିତରେ कौन relationship थिला? चलो let's say they are partners. ଗୋଟେ company ର partners ଥିଲେ. Okay. ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଲା ତାକୁ publish କଲା ତାକୁ 10 ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି. They were kind of audience. तो ତାଙ୍କ କାମ କଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ସେଟା. So they are a kind of witness कि हाँ ये एमती लिखिଛି या लिखिଛି. Okay. The particulars of dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant. So the facts that are there, there was a dispute, may be relevant if it affected the relation between A and B. Suppose ଆଉ ଗୋଟେ fact ଅଛି कि A ଆଉ B jointly ଗୋଟେ hotel କୁ own କରୁଛନ୍ତି. ठीक ଅଛି, which is not related directly to this dispute. But ଯେହେତୁ ସେ ହୋଟେଲଟାକୁ ସେମାନେ ଓନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ ବି ଅଛି. ଓକେ, ଏଠି ବି ତ ସେମାନେ ପାର୍ଟନର୍ସ ଥିଲେ, ସେ ହୋଟେଲରେ ବି ସେମାନେ ପାର୍ଟନର୍ସ ଅଛନ୍ତି. ରାଇଟ୍. ସୋ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ସେ ସେୟା କହୁଛି. ଦ particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel. ତ ଏ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଓନ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ବାଇନ୍ଡଲି, ତାର କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ, are irrelevant. ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଏଇ କେସରେ irrelevant ହିଁ ହବ generally. So the fact that there was a dispute may be relevant if it affected the relation between A and B. Okay, तो आंक ଭିତରେ ଗୋଟେ dispute ଥିଲା. Suppose ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ change କରିଦବା କି ସେଠି ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ dispute ଅଛି ଯାହା cause ରେ ଏ libel ଟା ହେଇଛି. In that case that will be obviously it will be relevant. Okay, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମୁଁ ସେଟା କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ slander ଆଉ libel. Okay, slander ଆଉ libel. ତ ମତେ ସେଦିନ ଡିଫରେନ୍ସ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାପରେ କହିଥିଲି ଆପଣ ଟିକେ ପଢିବେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି. ଓକେ, ଆମେ କଣ ଓଭରଅଲ ତାକୁ କହିଦଉଛୁ ମାନହାନି. ରାଇଟ୍, ମାନହାନିର କେସ୍ କହୁଛୁ ନା କଣ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନହାନି କି Defamation. ଓକେ, defamation. So that is an umbrella under which okay defamation ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ. So I had asked you कि slander ଆଉ libel ଭିତରେ କଣଟା difference ଅଛି? The difference is more pronounced in American and English law. Indian law रे okay एते नहीं. बुझिପାରିଲେ? ଯୋଉ type ରେ ବି ଆପଣ ଜଣକୁ defame କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଟା will be taken into consideration by the court. So what is the fundamental difference between libel and slander? Anyone who can tell me? Sir, libel is written or published, whilst slander is most likely spoken. Okay, slander is spoken, libel is published. Out any other difference?
ओके एटा बेसिक कांसेप्ट टिके पढ़ी देबे जो माने ए टर्म गुडा जानि नांती स्लैंडर और लाइबर ओके जस्ट गो थ्रू इट वंस सो ए जो पर्टिकुलर बी इलस्ट्रेशन रे आपण कहला ओके आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ताको सिंपल भाषा रे कहले जदि दी जनक भितरे ओके किछि गोटे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप अछि एंड दैट ट्रांजैक्शन okay is the fact in issue or is a relevant fact ताहले facts which will be related to that also will be relevant ठीक अछि तो एठी कोन होछि ना ए जो पर्टिकुलर एग्जांपल देला okay how this particular example is related to section 7 आपण सेटा बुझी परिया दरकार तो go through it once okay पांचटी पॉइंट हमें कहलु सेक्शन 7 रो पांचटा इंग्रेडिएंट्स हमें कहलु तो एटा कहा अंडर रे जीवो सेटा देखो ओके एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी अंडर रे जीवो ओके मा से बाकी चारटा जा में लिखछु ता अंडर रे जीवो यदि सेमती सब गुडा आपण कर दे परिबे इफ यू कैन कैटेगराइज ऑल द इलस्ट्रेशंस ओके and to which of these 5 elements they will belong then you have understood the section एटा कोथरे जीवो बीटा the 5 It's the elements relation between parties. No, to explain or introduce a fact in issue or relevant fact okay so the last part of the this thing okay where that tells you the so the fact there was a dispute may be relevant if it is affected the relation between the parties so normally speaking the relationship right okay either support or report establish identity it is eta nahi fix a time or place nahi show relationship between parties okay सेटा भी हे परिबो सेटा रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज सेटा देखो ओके थर्ड तक आसंतु A is accused of a crime the fact that soon after commission of the crime A absconded from his house is relevant under section 6 as conduct subsequent to and affected by facts in issue okay as conduct subsequent to and affected by facts in issue जोड़ा already हमें देखी से up to section 6 right the fact that at the time when he left home A had suddenly and urgently an urgent business at the place to where he went is relevant as tending to explain that the fact that he left home suddenly the details of the business on which he left are not relevant except in as so far as they are necessary to show the business was sudden and urgent okay so there कौन है ना गोटे क्राइम पर ए से क्राइम सीन रो पड़े he has absconded from his house ठीक अछि आउ ए जो जिंसटा ए जो फैक्टटा एटा रेलेवेंट अछि सेक्शन 6 अंडर रही हमें देखि तो conduct subsequent okay and also affected by the fact in issue तो एबे धरंतु सीए एटा प्रूव करि पउछि कि मते गोटे हठात कि गोटे कॉल आसिला हॉस्पिटल रु मोर रिलेटिव गोटे बहुत सीरियस अछंती एडमिट हेले बे हॉस्पिटल रे मो नंबरटा लास्ट कॉल रे थिला फोन रे सेत पे पुलिस मते फोन करथिला कि हॉस्पिटल मते फोन करथिला मो संगे संग पड़े ठीक अछि जदि से सेटा एक्सप्लेन करि पउछि that he had a sudden and urgent business at that place माने हॉस्पिटल रे ओके सो सेटा रेलेवेंट हे करे काहे कि से हठात के लिए पड़ेला ओके तो से कोन पाई गला डिटेल्स ऑफ जाय कि सेठी मेडिसिन किनिला ओके डॉक्टर संग कथा हला सेगुडा रेलेवेंट ना हे पर ओके द डिटेल्स ऑफ बिजनेस on which he left are not relevant that he needed to give medicines he needed to consult with the doctor wanted someone to consult and no one was available okay so सेगुडा relevant habani exception ta hela if they are necessary to show that business was sudden and urgent so just showing that immediately
doctor wanted to consult before going for a surgery. ताहले सेटा कुहाव. ताहले the immediate nature of the requirement at that place, that is the hospital, सेटा clear है जो कि किसी डेरी करी पर न था वेट कर पर न था कि यही जगह रे तो क्राइम टा ही पुलिस आस्ता था सीधा पुलिस ने पता ही था. Okay, so this is your illustration C. तापरे D की असंतु A sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A. Okay, so A और C ଭିତରେ ଗୋଟେ contract ଥିଲା. ଠିକ ଅଛି. A ଏବେ B against ଗୋଟେ case କରୁଛି कि B ମତେ କି C ଠୁ okay ସେ contract ଟା ଯେମିତି C contract ଟା breach କଲା okay ତାକୁ ये induce କଲା. B has induced C to breach the contract. Contract was between A and C. Okay. C on leaving A's service says to A, I am leaving you because B has made me a better offer. ठीक है. So ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର କାମଟା କରିଦେବି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ମାର୍ଚ୍ଚ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଏପ୍ରିଲ ମେରେ କରିଦେବି ଆଉ ଆପଣ ମତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ. କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ କହୁଛି କି ସେ ମତେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବ. ବେଟର ଅଫର ଦେଲା ମତେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡିକି ଯାଉଛି. Okay, that is what he is saying. I am leaving you because B has made me a better offer. ठीक है. This statement is a relevant fact as explanatory of C's conduct, which is relevant as a fact in issue. ସେଇ ଜିନିଷଟା okay जोटा A claim करूची. Okay, B को B ऊपर से B को sue करती कि you have induced C to break the contract between me and C. So that is your illustration number 4. This statement is relevant as explanatory of C's conduct. Okay. So C ro conduct relevant achi. Okay, what he did, right, and why did he break that contract with A? So that is relevant. Okay, relevant as a fact in issue. That is the fact in issue now. B induced C to break the contract. So C has broken the contract because of this. Agent explain karuch. Okay. So A, B, C, D. प्रथम चार्ट illustration. Are you clear? ना किसी doubt अच्छे आपनकर ताले पचारो. Okay. तापरे असंतु ताले E को. Fifth illustration हमारा. A accused of theft is seen to give the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife. Okay. B says, as he delivers it, A says that you are to hide this. Okay. So B's statement is relevant as explanatory of a fact which is part of transaction. Okay. So suppose A is being accused of stealing something. Theft or accusation ता ऊपर अछि. जो जिनसड़ा चोरी है जी सीधा B को दोच. People have seen it. It is okay seen. A is accused of theft. Is seen to give that stolen property to B. Let's say गोटे सुना necklace ताको B की दोच. B तापर ताको नहीं की A रो wife की दोच. आउ देला बड़े कोची कि A कोई ची एटा लुच्चे की रखे दे. Okay, so B रो statement is relevant. Okay, because it explains. Okay, the the conduct of A and also B. ठीक है. लुच्चे की रखे लिखा है पहला.
सी भी जानछि बोधे एटा चोरी रो जिनिस ओके सो again it will be a relevant fact ए जो स्टेटमेंट ता बी देला ए रो वाइफ को कि आपण एटा नियंतु ए देचंती त लुचै के रखियो ओके लास्ट F sixth illustration A is tried for a riot and is proved to have marched as the head of a mob. The cries of the mob are relevant and explanatory of nature of transaction. See, nije kar nathi beta agu dekhiba riots of mob. Okay, cases. Koni cheti. Now what a riot is. The leader of the mob was A. Hela. Acha. Tapare. As the leader of the mob, se mob kon सब कहिछि. Okay. कि हमें या कर दो हमें से कर दो whatever जहाँ भी. Like in that Kanhaiya Kumar case, right? City riot in Atla, but anyway, whatever. City, he was one of the organizers. There are many organizers, he was one of the organizers. How City क्या जड़ा पड़ला कि किसी बाहर पिला आउ किछिटा पिला जो माने कि लाइक मे भी कश्मीर रु थिले कि कोन से माने किछि उडे सेठी सब कोन द परिबा क्राइज की किछि आपडकर स्लोगन्स वरिका देथिले फॉर एग्जांपल भारत तेरे टुकड़े होंगे तापर रिलीजियस जिनसोडा से माने कहिथिले ओके सो अल्टीमेटली ता ऊपर सेडिशन रो केस भी चलला राइट फाइनली इट वाज ड्रॉप कांगिना यू नो सेडिशन ता नाही सेमती अब बीएनएस रे आपण पढिथिबे सेटा ओके नाउ इट इज अगेंस्ट द स्टेट इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट ठीक है तो नेशन राइट सो दैट इज a different matter तो से जहाँ भी हो ये नीचे सेटा कोई ना था पर ठीक है बट ता ऊपर भी चार्जेस लागिला ठीक सेमती गोटे मॉब जते बेले जाउची एंड समवन इज सीन टू लीड द मॉब तापर मॉब कोन होची ना सी आउट ऑफ कंट्रोल है गला जाई गाड़ी फाड़ी लोकंकर डिस्ट्रॉय कला पुलिस वाला को अटैक कला सेते बेले मॉब आउट ऑफ कंट्रोल है गला मॉब रो लीडर सी मना करछ नहीं 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 एमती करनी से सेया करछ बट ताका तके मानना ओके तो जहाँ भी हो ऑल्दो सीए अटैक करिनी बट स्टिल देन इट विल बी रेलेवेंट ओके मॉब कोन कोन कहूतिला तो बहुत एग्जांपल्स अछि ओके फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग दिस सीए प्रोटेस्ट डिफरेंट स्टेट्स रे इतला उत्तर प्रदेश रे जतले हला तो जो स्पॉन्सर्ड लोकोडा माने कोन कले ना बहुत भंगा भंगी कले प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी को प्राइवेट लोगों को प्रॉपर्टी को प्राइवेट लोगों को तो दे कैन गो टू द कोर्ट्स एंड यू नो स्टेट कोन कला इमीडिएटली ताको अरेस्ट करला ताको जिंसो ताको घर प्रॉपर्टी नीलाम करिया स्टार्ट कला टू रिकवर द मनी ठीक है वेरी स्ट्रांग स्टेप टेकन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आउ एमानकर फोटो सब मेजर इंटरसेक्शंस रे जो मेजर चॉक्स रे लगाय गला सीसीटीवी रो ये लोक को जे जानछथि ये लोक या करछथि रिपोर्ट दियो सो सेटा अक्यूज्ड भी राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड अपन पड़े ओके तो सेमान सुप्रीम कोर्ट पड़े तो हाई कोर्ट गले हाई कोर्ट भी मना कर देला कि नहीं एटा हवा बदन तापर से माने गवर्नमेंट अलगा बाईपास अलगा रूट नहीं किसी चले ले तांको से स्टेट गवर्नमेंट ते सुप्रीम कोर्ट बोले ओके सुप्रीम कोर्ट भी से कहले जा हाई कोर्ट करे कि नहीं एमती हवा कथा न ताको राइट्स को अफेक्ट होछ विद इन 7 डेज ये ऑर्डिनेंस बाहर कर मींस दैट इज नाउ ए लॉ ऑर्डिनेंस ता आगु जे लॉ हे गला ठीक अछि तेनु ऑल्दो उत्तर प्रदेश रे आपण कहि परि वेरी 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 सेंसिटिव सिचुएशन किंतु सेठी अवस्था माने पूरा लॉ एंड ऑर्डर पूरा ठीक कहीं कि ना से जानी चंदी केमती डील करे जे जो माने लॉ विरुद्ध रे काम करछंती कंपेयर दैट टू व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन वेस्ट बंगाल सेठी पुलिस हाथ तो जोड़ुची ट्रैफिक पुलिस मॉबस्टर्स को सामने रे भांगा भांगी करन दया कर भांगा भांगी करन
ताल ताको एटीट्यूड और मेंटालिटी केमती हो ठीक अछि ऑन द अदर हैंड ये कहउछथि समस्त खुशी रे रहबे समस्त भल रे रहबे लॉट ऑफ फॉलो करो तुम्हें जीए भी है तो यू मे बी विकास दुबे यू मे बी अतीक यू मे बी एनीवन तुम्हें जदि लॉ को हाथ रे नेलो ताले स्टेट तुमरो पूरा जब कहती ओडिया रे ना 14 पुरुष उधारे देबो तो जी लॉ बाहर जाई काम करिया जहाँ अभ्यास हो जाई सी भी साइज रे अछि ठीक अछि सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीडर सो एनीवे से मॉब केस रे ओके जे मॉब रो लीडर ता ऊपर ही फाइनली ओके रेस्पॉन्सिबिलिटी आसीबो सी निजे न करि पारे इवन पार्टिसिपेंट ऑफ ए मॉब गोटे मॉब रे जाई तापर सब भंगा भंगी हेछि मु भी से मॉब रो पार्ट थिली बट मु भंगा भंगी करनी बट मते भी अरेस्ट करा हबो सेम चार्जेस रे ओके आगु को अपन बीएनएस रो पढी देबे सेउडा सब इंटेंशन ठीक अछि कॉमन इंटेंशन कोन राइट सो सर अनलॉफुल कॉन्स्पिरेसी असेंबली रे असिस्ट हां अनलॉफुल असेंबली जदि अनलॉफुल असेंबली केतळे होय आपनकर फंडामेंटल राइट अछि टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स पीसफुली असेंबल करियो विदाउट आर्म्स आपण पथर धरिकी ये करे आउ पीसफुली भी करनाली प्लस जदि सेठी ऑलरेडी किछि ऑर्डर्स अछि कि सेठी असेंबल करिवोनी तथापि आपण असेंबल करछु ओके तो सेठी आपण लॉट भांगुछन राइट तो ये जे लीड करूछि ताको तार रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट तो एबे बहुत गुडे स्टेट गवर्नमेंट्स ओके से माने जदि आपण भंगाभंगी किछि करिवे स्टेट प्रॉपर्टी आपणकर जदि माने लोक माने को करंती से जेतोले आपण ना रे आसीबो कि यू हैव टू रिकवर दिस से सब घर पर ओके छाड़ी की पळंती एब्सकॉन्ड करी जानती तो गवर्नमेंट मेनली उत्तर प्रदेश रे इवन मध्य प्रदेश करी से माने को करछि जो तुमे एब्सकॉन्ड करो किछि ने हमें तुम प्रॉपर्टी बिकी दो ठीक है तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर करी बिकी दो किछि असुविधा तो सेटा हम राइट्स अछि से माने सब कोर्ट को जाउछ आमर कोर्ट्स नाम टिके को राइट बेस राइट ऑफ एवरीवन टेररिस्ट भी राइट अछि से आछि जो टेररिस्ट पे मास्टर माइंड ओके तार पण सिटी पार्टनर ऑलरेडी हे गलन ओके कोन ना ऑब्वियसली ताको तो के रिप्रेजेंट करिवेनी से जो राणा जे अछि ओके एते वर्ष परे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताको यूएस टू एक्सट्राडिट कर यूएस कहा को दिए ठीक अछि यूएस कहा को दिएनी अलगा कंट्रीज को अनलेस यू नो एते वर्ष परे दीजन लाभ किछि नै एबे धरन हमें तो कन्विक्ट करबा कोनटा हे जो तार तो हमें जा करिया कथा कर सरलुनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली okay what Pakistan did we have already replied directly and indirectly so that country is virtually on the verge of breakup ठीक अछि सेटा तो हे सरलानी but you see how an America केमती ताको यूज एंड थ्रो कला ओके आ गोटे अछि से जो हेडली डेविड कोलमैन हेडली he is American citizen he is or was American citizen and was a double agent okay अमेरिका रो भी एजेंट थिला पाकिस्तान को भी हेल्प कला ताकू दबन राइट बट आपको दे दल राणा को पाकिस्तान ओके पाकिस्तानी ओरिजिन बट से को अलगा सिटीजनशिप नहीं की रोकी ठीक है हेडली की दलानी आपको दे दला अदर एंगल्स आर आल्सो देयर कुछ पहले से जा भी हो तो सी ताकू ही इज द मास्टर माइंड ओके ऑन द मुंबई अटैक्स तो ये जतरा आसीला आपको के रिप्रेजेंट करिवेनी ऑब्वियसली ओके नो वन इज दिल्ली बार रो कोनोसी लॉयर को रिप्रेजेंट करने ओके तापर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी रो से मन जाबेले देबे ना यू नो अबाउट लीगल एड एवरीवन हैज टू बी रिप्रेजेंटेड ठीक है जी तो से कसाब पई भी तो रिप्रेजेंटेशन अपन करथिले ना आपको भी दियाला रिप्रेजेंटेशन ठीक है जी तो जो लॉयर को चूज कराई छी एबे समस्त ताकू ट्रोल करछथि से बिचारा स्टेटमेंट दो जे मते मु कोन माने जानि सुनि कि नेली एटा लॉ रे अछि एटा करा हो ओके तो मु को खुशी रे नोची केसटा exactly what had happened with that you know kasab कुछ बेले सो एनीवे एटा सिंपल जिंस हला रॉयड को जे लीड करूची सीए वायलेंस को डायरेक्ट न करि पारे बट जदी मॉब टा वायलेंट हे गला कल्पेबिलिटी तार ही हबो गवर्नमेंट जो पैसा बे माने आदाय करछन कंपनसेशन ताठू करिवे बुझि पारे एंड एवरीवन हु हैज बीन इन्वॉल्वड जे करू कि न करू सेटा भी मन रखिबे if you are a part of the mob आपनकर liability रोच
You may not have been part of the violent, okay, incident or the violence. Police गाड़ी की पड़ी है जहाँ करो से सब सेगुड़ा मु करनी କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ଲୋଗାନିଂ କରୁଥିଲି ଥିଲି ସେଇ ଇଏରେ ଯେତେ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ହେଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଓକେ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବି ମୁଁ ଥିଲି ସ୍ଲୋଗାନିଂ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭାୟୋଲେନ୍ସରେ ପାର୍ଟ ନେଇନି ମୁଁ ମୋର ପଳେଇଛି ଓକେ ସୋ ଏନିୱେ ଏଠି ସେ ଯୋଉ ଦ କ୍ରାଏସ୍ ଅଫ ଦ ମବ୍ କ୍ରାଏସ୍ ମାନେ କଣ ମବ୍ କଣ କାନ୍ଦୁଥିଲା କି କ୍ରାଏସ୍ ମାନେ ସେ ତା ସ୍ଲୋଗାନ ଯାହା ସବୁ ଦଉଥିଲେ because that also tells you the intention କିଏ କଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛି okay the cries of the mob are relevant as explanatory okay of the nature of the transaction ବୁଝିପାରିଲେ so these are the various okay illustrations जोटा आपनकर section 7 रे देखिले so any doubts you are having here related to section 7 then you can tell me and important case law है Queen Empress versus Abdullah okay which dealt with the identity of the accused 1885 ର case okay so now the thing is that Queen Empress कौन ପାଇଁ କୁହାଲା ଆମର ତ R କୁ ଆଉଥିଲା ନା ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ okay so Queen Empress କାହିଁକି କୁହାଲା so this is my question for tomorrow okay ଆମେ ଦେଖିଲୁ R versus Bedingfield ଠିକ ଅଛି ଏଠି R versus Abdullah ହେଇଥାନ୍ତା Queen Empress କାହିଁକି କୁହାଲା something changed what changed okay 1885 ର case ଟା right so ସେଇଟା ମତେ ଆପଣ କାଲି କହିବେ why Queen Empress why not R okay it has to do something with the statutes or the law which was brought in ମୁଁ hint ଦେଇ ଦଉଛି you know why 1857 was important ଜାଣିଛନ୍ତି 1857 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା related to India and England British India and England okay anyway ସେଟା କାମ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ hint ଦେଇଦେଲି ଆପଣ ତାକୁ କାଲି ମତେ କହିବେ why Queen Empress why not R hello okay now come to এটা ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଟା heading ଟା ଦିଅନ୍ତୁ test identification parade or TI parade ତାକୁ କୁହାଯାଏ test identification parade or TI parade तो मानेटा कौन बुझले तो जोटा कि विटनेस आइडेंटिफाई करिवो हां एई लोक को देखथिली ओके अक्यूज को आइडेंटिफाई करिवो बहुत जण का भीतर ओके सो फर्स्ट टेक डाउन objectives in Ankush Shinde versus state of Maharashtra in Ankush Shinde versus state of Maharashtra in Ankush Shinde versus state of Maharashtra 2009 right okay 2009 Supreme Court gave the following objectives of TI parade. Gave the following objectives of TI parade. Okay. So majorly theta objective Supreme Court कहला. Objective 1 to enable witnesses to satisfy themselves that the person whom they suspect is really the one
whom they suspect is really the one who was seen by them, is really the one who was seen by them committing the offense. Committing the offense. To enable witnesses to satisfy themselves that the person whom they suspect is really the one who was seen by them committing the offense. तामाने एटा हैला from the side of the witness. Okay. कि एई लोको को ही मु देखथिली से क्राइम टा करथिला. तो से भी निजे satisfied हबो. तो satisfaction of the witness. ठीक है. नल पूर लोको को आपण prosecute कर दे. Okay. तापरे second. So this is from the point of view of the witness or sometimes even the victim. Victim भी केतले से तारो चूज करियो ना ये ए लोगों से करछि सेटा ठीक रे जानछि कि नहीं मतलब यदि भूल लोगों को पुलिस यदि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड हबनी भूल लोगों को पुलिस ओके ताको प्रोसिक्यूट कर दबो ये भाभी जो आउ जने प्रोसिक्यूट होछि ये देखिनी कि आर कंडीशन केमति नै से देखि परियो सो अलगा सब प्रॉब्लम सब तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हला सो विटनेस सैटिस्फाइड होवर होछि कि मु जाको देखिथिली एई हला से लोक and second to satisfy in investigating authorities second objective to satisfy investigating authorities that suspect is the real person to satisfy investigating authorities that suspect is the real person whom witness had seen in connection with the said occurrence. Okay. To satisfy investigating authorities that the suspect is the real person whom witnesses had seen in connection with the said occurrence. Hello. So, this is test identification parade. Okay. The objective as per Supreme Court. ठीक है. तापरे आरो बहुत गुटे डायमेंशंस अछि जोटा कि परीक्षा रे पड़ी छी अपन એટલે અમે एटा सारी की जेतले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करबा नॉट ओनली ओजेएस रो अलगा ईयर भी कंडीशंस ऑफ द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडीशन रे कराई छी गुटे क्लोज रूम रे कराई छी सिमिलर सेटिंग रे कराई छी सपोज मु जेतले देखिथिली कि विटनेस जेतले देखिथिला से अक्यूज्ड को से करथिला से बहुत डिम लाइट थिला ठीक अछि तो जजमेंट से भी अछि कि जैसे डिम लाइट थिला त सेही टाइप रो सिचुएशन अपन क्रिएट करियो जेमती क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन हुए सेही टाइप रो सेम टाइप रो ये रे याकू चिनिबार अछि बहुत अल्प देखा होतरा अब आपण पूरा लाइटेड करी कि गोटे जगह रे तांको रखु जन तो ये केमिति परसीव करूची राइट सो लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर सेही पई बहुत गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबले परे व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टीआई पैरेड okay just by itself identification in a TI parade okay सेटा आपन कन्विक्शन पे सफिशिएंट की तो नेक्स्ट पॉइंट रे हमें सेटा को देखिबा सो नेक्स्ट हेडिंग दियंतु एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टीआई पैरेड हला एटा हमरो दिया हिची सेक्शन 9 रे इंडियन एविडेंस एक्ट ओके जोटा हमें सेक्शन 7 रे पढुछु भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो सेटा कॉरेस्पोंडिंग ओके लॉटर लिखि दियंतर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जोतरे टीआई माने सेक्शन 9 और सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओके और सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 7 मेनली सेक्शन 7
of Bharatiya Sakshi Adhiniyam ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପରେଡ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନି. Test identification parade is an inference from that particular section. Okay, the next heading diyantu evidentiary value. So point 1 lekhantu, the evidence of TI parade, the evidence of TI parade just a minute, the adding capital. First point like the evidence of TI parade is admissible under section 7 of BSA. Okay, section 7 of BSA. Point 2, এইটা মনে রাখিবে কারণ এই পয়েন্টরে হি সব জিনিস আছে. ওকে, it can be used only to corroborate the substantive evidence. It can be used only to corroborate the substantive evidence. এই ফ্রেজটা আন্ডারলাইন করন্তু, only to corroborate the substantive evidence. Only to corroborate the substantive evidence given by the witnesses in court. It can be used only to corroborate the substantive evidence given by the witnesses in court regarding identification of the accused. Regarding identification of the accused as the doer of the criminal act. Identification of the accused as the doer of the criminal act. Point 3. Thus, the earlier identification made by the witnesses, at the TI parade, thus the earlier identification made by the witnesses at the TI parade by itself has no independent value. By itself has no independent value. বুঝিপারলে, only corroborative evidence, তার নিজের independent value কিছু নথায়. এটা ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি মেনলি সেমানে নিজକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି କି ଏବେ କୋର୍ଟରେ ଟ୍ରାଏଲ ହବ ତା ଆଗରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଦବା କି ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ତ, ଠିକ ଅଛି. In itself it does not have any independent value. ବୁଝିପାରିଲେ? Next point, the above has been pronounced, এই যা ଆମେ ଦେଖିଲେ evidentiary value of test identification parade, এটা landmark কেসটা. Okay, the above has been pronounced by the Supreme Court in the landmark case of Sampath Shinde versus State of Maharashtra, 1974. Sampath Shinde versus State of Maharashtra, 1974. Okay, তারপরে বুঝিপারলে এটা এভিডেন্সিয়ারি ভ্যালু কোন টিআই প্যারেড র, তো সেইটা বেসিক্যালি ওকে আইডেন্টিফিকেশন ইন দ্য কোর্ট
ताकू कोर्ट ओके एम्फासिस देबे इंडिपेंडेंटली खाली टीआई परेड रे जो आइडेंटिफिकेशन हेची सेटा खाली कॉरबोरेटिव वैल्यू तार अछि इट इज यूज्ड एज कॉरबोरेटिव एविडेंस ओनली ओके बट ओनली बेस्ड ऑन टीआई परेड आपण कन्विक्शन कि किछि ताकू गोटे सब्सटैंटिव ओके गोटे बहुत वेटेज कोर्ट ताकू दियंती काई ना कोन होय कि कोन पई एटा आपण भी जान परिबे कि पुलिस सामने रे जहा भी आपण कहउछन कोर्ट सेटा जनरली एडमिट करंती ठीक अछि एज एविडेंस बुझि परले जहा भी आपण पुलिस की कहउछन तो एग्जैक्टली पुलिस सामने रे भी जहा आपण आइडेंटिफाई करछंती सेटा कोर्ट रे आपण इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करे पड़िबो कोजण सेठी हॉस्टाइल विटनेस की एडा सब आपण देखिबे ए सब जिंस रहबे से पुलिस को हां मु देखली ए लोक करछि या करछि सब ठीक अछि आइडेंटिफिकेशन रे पूरा ताको आइडेंटिफाई कर देले तापर इधर प्रेशर पड़ला कि कोन हला से तापर जेतले कोर्ट को जिबे सेठी कहबे मु मत मने पड़नी लाइट टा टिके डिम थिला हम मे भी ता भलिया देखा जिबा ओके बहुत डिफरेंट टाइप रो अजीब अजीब एक्सप्लेनेशन दिया हुए यू नो अबाउट दिस जेसिका लाल मर्डर केस ओके तो देयर वाज ए एक्टर जे की बहुत बड़े फिल्म से देखा जाए ओके साइड रोल्स करथला जनरली कॉमिक टाइप रो रोल्स करथला ओके was person was present ओके जेतले जेसिका लाल को से ता मर्डर कराला ओके तो ताकोटे डकाला कोर्ट को ऐसे कि यू नो यू गिव द एविडेंस एते प्रेशर था तापर से कहले बंगाल रू बेसिकली एक्टरटा से कहले मु हिंदी जाननी कि कौन सो कथा तो किछ बुझी परलिन जे कोन कथा था मु नथिली सेठी जा जा कहले माने बहुत बड़े एक्सक्यूज देला ता भीतर गोटे एक्सक्यूज देला मु हिंदी जाननी बट हिंदी एटलीस्ट तो 15-20 टा हिंदी फिल्म रे काम करछ ओके एनीवे बुझ परले तो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टीआई परेड इज कॉरबोरेटिव ओनली ठीक है तापर नेक्स्ट लिखंतु वैलिडिटी ऑफ identification tests and parade validity of identification tests and parade point 1 in Muhammad Kalam versus state of Rajasthan 2008 in Muhammad Kalam versus state of Rajasthan 2008 the Supreme Court established that even if identification of accused is by one witness only, even if identification of accused is by one witness only, and other witness who was also present at the crime scene, and other witness who was also present at the crime scene did not participate, the investigation is not vitiated. The investigation is not vitiated. Suppose it dita eyewitness option. Okay, jone participate kala test identification पर सी identify कला आउ जने मना कला से participate करू so आपण को इन्वेस्टिगेशन जोटा पुलिस रो सेटा विशेट हबो माने सेटा एमति नो कि दी जण तो कहले नि तले तमे जान परिबेन तेनो आउ इन्वेस्टिगेट करनी ए पर्टिकुलर लोक नै जणे भी जदी कहउची ताले आपण इन्वेस्टिगेट से हिसाब रे करियो काहे ना ए पर्टिकुलर केस रे ओके सो जे अक्यूज थिला ता कहया कथा कि सेठी तो दी जण कहउतले तो जण तो आसलन जण तो मत आइडेंटिफाई करनी जणे ही करची ओके ताने कि छोड़ा असुविधा अछि से कहे कहले न कोर्ट कहले न से
50 जन थिले भी जने कहउचंती ओके बहुत लोक थाई परंती आपण तो फोर्स करि परिबेनी के जन डरी कहबेनी के जन ई सब जिंस रे इन्वॉल्व होबे जानतिनी बुझि गले जस्ट अ मिनट सर ये जो केस रो ईयर टा दिए कहबे हां मु कहउछ एटा हला मोहम्मद कलाम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2008 even if identification of accused is by one witness only and other witness who was also present there at the crime scene does not participate, investigation is not vitiated. Okay. बुझिपारे जने भी कले सेटा इन्वेस्टिगेशन से हिसाब रे हे परिबो गोटे आई विटनेस जे की आइडेंटिफाई करूची सफिशिएंट 50 जन की गोटे कोरम न था यार कि यदि 10 जन थिले 4 जन करिया कथा जेते जन करिवे आउरी स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस ता बढ़िबो अनडाउटेडली बट सपोज 5टा विटनेस थिले ठीक अछि टीआई परेड भी 5 जन पार्टिसिपेट करले से 4 जन हॉस्टाइल हे गले जणिया रहिला सी प्रथमरु जा कहूची आज बंद से भी कहूची ओके तो ताकू बेस करी की भी ओके आउ जदी व्हाटएवर इज सेइंग इज बीइंग corroborated by other ancillary evidences ताले कन्विक्शन करी हो राइट तापर नेक्स्ट पॉइंट लिखंदु in Munna Upadhyay versus State of Andhra Pradesh, in Munna Upadhyay versus State of Andhra Pradesh, 2012, in Munna Upadhyay versus State of Andhra Pradesh, 2012, the Supreme Court established that photograph of accused, even if assumed to be published, photograph of accused, even if assumed to be published, does not affect the validity of TI parade. Photograph of accused, even if assumed to be published, did not affect or does not affect the validity of TI parade, even if there was long gap, even if there was long gap between publication and holding of TI parade. Even if there was long gap between publication and holding of TI parade. तमने कौन एमिति डिफेंस नहीं होबनी कि लेट्स से ए लोकटा अक्यूज्ड अछि तार फोटोग्राफ आइदर सोशल मीडिया रे कि कोठी भी सडा पब्लिश हे गला कि इवन तको मे यू नो पुलिस ओके से अक्यूज्ड को तार फोटो वायरल माने सब जगह रे वांटेड करी के देखै छी ओके तेनु लोक देखि जन सेटा तो टीए जने आसी कहूची हम मु सेठी थिली त किया भितर रहबो तले ए लोकटा रहबो काना ता फोटो को देखि दी ओके तो सुप्रीम कोर्ट को तो सी ऑब्वियसली यही केस रे ओके जो मुन्ना कुमार उपाध्याय तांकर से कहरतला कि मो फोटो पब्लिश हे जैतिला से ताकू देखि मते आइडेंटिफाई करछि मु क्राइम टा करछि सेटा से देखिनी तो सेठी सुप्रीम कोर्ट कहले कि जदि भी अक्यूज्ड रो फोटो ओके ताकू जदि आपण एमती भाबते पब्लिश हे जेउ ओके सेटा टीआई पैरेड रो वैलिडिटी को इफेक्ट करियो ओके आ जदि गैप भी बहुत अछि ओके कि फोटो केबे पब्लिश हेतिला 4 वर्ष पर टीआई पैरेड होछि कि केते दिन पर होछि ओके सो इट विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी राइट तो सही एटा नहीं परियोनी कि मत ओटे देखि देजन टीवी रे आ सेट पे मत आइडेंटिफाई कर देल बुझि परले सो दिस इज बेसिकली योर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड एमती केतेडा एप्लीकेटिव क्वेश्चंस अछि जोड़ा कि स्टैट्यूट रे दिया हे नथे
किंतु सेगुडा आपनको प्रिपेयर करिया पे पड़िबो पर्टिकुलर सेक्शन सहित फॉर एग्जांपल ए सेक्शन रे देयर इज nowhere nothing has been mentioned regarding okay your test identification parade but ठीक अछि अच्छा कहि थिना आइडेंटिटी ऑफ टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन ठीक अछि तो सेही हिसाब रे पीएसए रो सेक्शन 7 आउ इंडियन एविडेंस एक्ट रो सेक्शन 9 अंडर रे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जाउछ because it is identifying a person okay बुझि परले the concept is clear test identification parade कोन ता evidentiary value कोन आउ तारो related किछिटा पॉइंट्स हमें डिस्कस कलु is it clear थरे पढंतु जा लिखथिले जदि आपण बुझ पर नंती then you can ask else we'll go to section 8 नहीं so things said or done by conspirator in reference to common design तो एठी concept आसेला common design रो okay आउ conspirator okay से कोन कहिछि कि कोन करिछि so let us first go to the where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong anything said done or written by any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by one of them is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring खाली जे लिखिछि तार नुह जेते जण सेतरे ओके इन्वॉल्व थिले as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was party to it ठीक अछि तेनु anything which has been said okay आउ फर्स्ट जिंस कोन कहला where there is reasonable ground okay so this reasonable ground requirement is important to believe that reasonability ta kiye determine करे कोठी determine करिवे but there are tests of reasonability okay which we will see so where there is a reasonable ground to believe that two or more persons ठीक अछि so केतन लोक थिबे सेटा भी से कहिछि दुई की अधिका थिबे have conspired together to commit an offense or an actionable wrong what is the difference bns sorry okay जो मैंने करचंदी bns class you should be able to give the answer what is the difference between an offense and an actionable wrong एक्का जिंस तो नुह न से और लगे न थांता सेठी yes anyone जे मेंस लिखिचंदी आगुरु कहि परिबे ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग भितरे डिफरेंस कोन Sir, offense are always punishable, but actionable wrong is not always punishable. sure sure अछंती Sir, not sure. ऑफेंस टा सबु बेले आपनकर क्रिमिनल लॉ पब्लिक रो ता सोसाइटी अगेंस्ट जाए क्रिमिनल ई ऑफेंस टा रे किंतु आपनकर जे सिविल रॉन्ग टा रे नॉर्मली आपनकर से माने सिविल राइट्स ओडा को जाए इंडिविजुअल रो माने सी पर्सपेक्टिव रो ओके एटा सेकंड पॉइंट लेखंतु राइट सो एगुडा कोन ना केते गुडे जिंस हमें देखिबा जो गोटा की फंडामेंटली हमरो क्लियर हबार अछि टिके तारो मेथड इज द सोक्रेटिक मेथड you know what is Socratic method Socratic dialogues so Socrates was one of the great philosophers writers okay बहुत गुडे कोटेशंस अपन जानथिबे तांकर मेथड कोन थिला ना ओके डिस्कशन इन द सेंस गोटे कथा ऊपर आपण यू नो ये जने कोन कहबो से ता अगेंस्ट कहबो तो सॉक्रेटिक मेथड कहते तो आपण पढिबे ताकू काली क्लास बिफोर वी स्टार्ट यू टेल मी व्हाट विल बी
the difference, or what is the difference between an offense and actionable wrong. Okay, anything said, done or written by any one of such persons. Okay, सेटा भी underline कर दियंतु, anyone. आमे 5 जण बसचु, right? मोडे लेखुची गोटे आमे 6th लोक आम पई बहुत असुविधा करछि, तो आमे एमती गोटे प्लान करिया, गोटे पेपर रे लिखिली सेटा, ठीक अछि, in reference to their common intention, and rest 4 are agreeing with me. हाँ हाँ कमे गोटे कोन गोटे करिया, ठीक अछि, right? After the time when such intention was first entertained. So this is the exception. ठीक अछि, एटा देला exception. So underline करंतु तो. After the time when such intention was first entertained. That means not at the time when that intention was first entertained. ता before तो हेई परिबन केनता पण जानि नथि, ठीक अछि। मु प्रथम थर एबे कहूची कि ए लोक लेट से हमें 5 जण, ओके, आई टेल यू रियल एक्चुअल जिनसटा मु गोटे एग्जांपल नेबी। तो मु 11th 12th मु केंद्र विद्यालय रु करथिलु। सो केंद्र विद्यालय रे हमर जतले हमर मॉर्निंग प्रेयर टा हुए, तो एट द एंड, ठीक अछि, जतबेले श्लोकटा कह जाय, श्लोकटा कहला परे भारत माता की जय कह जाय। सो आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड 10th परे आसलु, तो हमर गोटे 5-6 जण पिलांकर गोटे वी आर वेरी क्लोज, केना सेतबेले आई एम टॉकिंग अबाउट 19, ओके, 2000 2001 एठी भी हमर सेतबेले जस्ट आफ्टर द सुपर साइक्लोन ओडिसा रे, वेरियस थिंग्स वर प्लेइंग ऑन, देश रे भी बहुत गुडे एंसो चलतिला। सो दिस 5-6 पिला में बसी कि हमर टिके जहा भी गोटे पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हम सब्सक्राइब करथुलु, तो गोटे नोटिस आसिला हमर वाइस प्रिंसिपल सर जी से आसी कहले कि ऑल इंडिया सबसु जाईची कि छोटे कंप्लेन हेची को गोटे जोन रु कि रीजन रु, केबी रो सब रीजन सुडा थाए कि से जो से भारत माता की जेटा कहवा ता जगह रे कोन गोटे ग्लोरी टू मदर इंडिया कोन गोटे से गोटे इंग्लिश रे कोन गोटे देखिल, कथाटा एका बट इमोशन टा अलगा। तो आमे 5 जन डिसाइड करू कि नहीं सेटा तो जाबे ना, तो प्रिंसिपल भी सेतर किछि कर पर न तांते, सेटा तो रीजनल हेडक्वार्टर रु आसी छै अपन को, ओके। तो देन आमे जा चिडीबिडी लेखा लेखि करया कथा कलु, एंड फाइनली सेटा किछि भी हेला, ओके। तो 3 थरो हेला से समस्त से जा भी से इंग्लिश रे कहैतला कहला, तर फ्रॉम 4th रे आमे एटलीस्ट 5 जन आमे हमर जा कहया कथा भारत माता की जय कहि, ठीक अछि। एंड वी कंटिन्यूड, एटा चलला 2 months 3 months 4 months, तापर आस्ते आस्ते पिला बढ़िया बे लागिले, इधर बहुत जन चुप है कि रोंती किछि कोहंती और बाकी जन जे, सो इट वाज अ काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट एटा लागला, ठीक अछि। तो जेतेबेले हमें डिसाइड कलु ए जिंसटा, राइट, माने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेट्स से फॉर मु जदी स्टेट को इक्वेट करबी हमर मैनेजमेंट से, ऑल्दो आवर मैनेजमेंट वाज क्वाइट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अस, कि ताको भी प्रिंसिपल को भी लागू दिला कि पिला जा कोचन से, ठीक अछि। फाइनली दैट सर्कुलर वाज टेकन अवे, ठीक अछि, दैट यू कैन गूगल एंड सर्च, ओके। सेटा सर्कुलर टा भी पाई जिवे नेट रे, आउ सेटा विथड्रॉल ऑफ दैट थिंग, तो एबे आई गेस सेटा रहउची केंद्र विद्यालय से, ओके। तो नॉट श्योर एबे कोन होची, बट सेते बेले तो होतला प्रेयर तो मोर ओले सेम ही अछि, बट एनीवे से जा भी हो ताकू जदी मोर कॉन्स्पिरेसी हिसाब रे देखिबी, जो हमें बसिथिलु 4-5 जण, आउ सेटा हमें एया करिवु फर्स्ट हैला असिस्टेंट कमिश्नर को चिट्ठी पठाबो, ओके, तापर प्रथम प्रिंसिपल को कहबो, तापर ताकू पठाबो, तापर एया कराबो से कराबो, प्रथम से सब जिनसोडा कराबो। तो एटा हैला फर्स्ट वी डिसाइडेड, प्रथम जतबेले हमें ए जिनसोडा जानिया पाइलु, हमें प्रथम गोटे डिस्कशन कलु, सेही डिस्कशन बेले, ओके, this will not apply. So basically after the time when such intention was first entertained by any one of them, okay। तेणु जदि किछि गोटे लेखा आइछि, किछि गोटे करा आइछि, किछि गोटे, ओके, कुहा आइछि, ओके, after in the first instance where we talked about this, तो सेटा relevant, it is a relevant fact as against each person
believed to be so conspiracy je jete jana thile sethe. Okay, as well as purpose of proving the existence of conspiracy as purpose of showing that such person was a party to it. Yes. So this is what the statute says. Okay, Bare Act ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କହୁଛି. ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ illustration ତାର, okay, it has given one illustration. Reasonable grounds exist for believing that A had joined in a conspiracy to wage war against the state. Facts कौन देला? The facts that B procured arms in Europe for the purpose of conspiracy. C collected money in Kolkata for a like object. D persuaded persons to join conspiracy in Mumbai. E published writings advocating the object in view of at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Singapore the money which C had collected at Calcutta, and contents of letter written by H giving an account of the conspiracy are each relevant. Sabbu guda relevant habo, both to prove the existence of the conspiracy, to good empty conspiracy actually exists korutila, and to prove A's complicity in it, although he may have been ignorant of all of them. Kana A kon korta hai? A ro basically koti kichi mention him. Okay, so A had joined in conspiracy to wage the war. It is jodi ame dekhiye fact hala B procure kala, C paisa dela, okay, D A kala, E A kala, okay, F transmitted from Delhi to G, okay, and so A sabu jinsa hochi, but A's complicity kemti apna proof karibe. Okay, to prove the existence of conspiracy and prove A complicity in it, although he may have been ignorant of all of them, and although the persons by whom they were done were strangers to him, and though they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it. Okay, conspiracy se join kariba aguru hi tai pare kimba se conspiracy dekhila jinso se mane muho karini pale. ठीक अछि, तो ताहेले भी ता against रे एटा relevant हबो. ठीक अछि, they are all relevant. Okay, are each relevant both to prove existence of conspiracy and A's complicity, okay, in it, although se directly setare, okay, involved not hai pare, baki uda to involved achhanti directly, बुझि परले. So that is the thing, you may not be an active member of that, but apna, okay, taku passively support korthile ki thille sei time re you were a member of that conspiracy, ଆପଣଙ୍କ participation ବହୁତ active न ହେଇ ପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ. So ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ important terms ଆମେ ଦିଟା ଦେଖିଲୁ. କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା co-conspirator ଆଉ common design. ठीक ଅଛି, co-conspirator and common design. तो ଏଇ ଦିଟା ଟିକେ underline କରନ୍ତୁ. ठीक ଅଛି, underline this part. Now you come to the elements or ingredients of section 8. Okay, first point है conspiracy. ठीक है, so section applies where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired to commit an offense or an actionable wrong. ठीक है, then common design, एटी common intention कुआइजी. Is there any difference between common intention which is given in IPC or let's say PNS and the common design which is mentioned here? Okay, anyone who can tell me what is the difference? Common intention and common design difference kichi na same jinso. So again eta bi lekhantu side tinta point hegala jota अपन टिके देखिबे and we will discuss it. Also I have not come to that point, से point को असले मु तारा distinction भी करेगी. Okay, सेटा भी important है ना, exam रे पढ़े, so we have to write the distinctions. Okay, 5-6टा मन रहिले 4-5टा में लिखि परियो. Right, exam रे concept is है, then तो तारा model answer रे 10टा point देछि. अपन होउछन 10टा point is not possible to write in 15 minutes, but you know the 10 points, you'll write 4 or 5. केना सबु 10टा मने पड़ जिवो सेठी बोली किछ माने नै. Okay, so it considers anything said, done or written by any conspirator in reference to their common intention,
after the time when such intention was first entered. Okay. Third important insight is relevance. So such acts are relevant facts against each of the person believed to be conspiring for the purpose of number one, proving the existence of conspiracy and showing that any person was a party to it. Okay. So these are the question पढ़ले notes हिसाब रे आपन को एडा लिखियार अछि. This is already there in your app. ठीक अछि. तो आपन से थ्रू लिखि परिबे, but if you are writing now you can write or you can directly take it from the app also. Okay. Landmark cases जति देखिबा, then state of Tamil Nadu versus Nalini. Who is this Nalini? Okay, it is a famous case of assassination of Rajiv Gandhi. Okay. The Supreme Court held that actions and statements made by conspirators were relevant under Section 8. ସେତେବେଳେ ତ ଇଏ ନଥିଲା. Okay. ଆପଣଙ୍କର PSA. Okay. At that time, Indian Evidence Act was there. So, say Indian Evidence Act हिसाବରେ କହିଛନ୍ତି. Okay. So, Section 8 of BSA that basically corresponds to Section 10, okay, of Indian Evidence Act. Side रे लिखि देई परिबे सेटा. Okay. Right. The court highlighted that even if the accused did not directly participate in the crime, their involvement in the conspiracy could be proved through Section 8. Okay, ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସେ DMK ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାମିଲନାଡୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ବଞ୍ଚି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ फांसी दंड दिया जायतिला कि एटलिस्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जायतिला, डेथ भी दिया जायतिला, बट से तांकर जो पार्डन पई अप्लाई करथिले तो पकई के रखिले तो बहुत वर्ष होला. ओके. तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट कोन कहले ना जे भी ओके डेथ पेनल्टी रे अछि तार गोटे फिक्स टाइम भितरे कि गोटे पर्टिकुलर टाइम भितरे यदि आपण तार जो अपील की ओके चाहूची जोटा ओके କିଛି leniency से चाहूची ओके तार पार्डनिंग पेटिशंस करिका जो जा भी से पकेची ताको न क्लियर करचंदी ताले सेटा ता फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट है. ओके इट इज अगेंस्ट हिज फंडामेंटल राइट्स. तो सेटा गोटे पर्टिकुलर टाइम भितरे आ जदी आपण करि पार नांती ताले ताको रिलीज कर देबे बेल फेल रे. तनु एंड द स्टेट गवर्नमेंट वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव, DMK गवर्नमेंट एंड इवन AIDMK गवर्नमेंट. इन फैक्ट सो मच सो दैट गोटे टाइम रे किछि प्रीवियस इयर्स आगुरु अपन देखिबे इवन द चिल्ड्रन ऑफ द देन एक्स प्राइम मिनिस्टर से माने भी स्पेशली ताको जियो से भी कहले ठीक अछि एते जरा हमर ताको अगेंस्ट किछि नै. ओके तो ताको रिलीज कर दबाटा किछि प्रॉब्लम नै, हमें सपोर्ट करते तो रिलीज कर दा. बट दैट इज नॉट ए क्राइम अगेंस्ट ए पर्सन और ए फैमिली, दैट इज द क्राइम अगेंस्ट ए स्टेट. एक्स प्राइम मिनिस्टर को आपण असैसिनेट कर दैछंती, राइट. तेनु एठी सो देन lot of things. So finally the tango bail fail se medi gala tango. Okay. Anyway, so that is a different matter. Seta tara both political dimensions भी अच्छी, legal dimensions देखिले. Okay. So in that case, Supreme Court said that even if accused did not directly participate in the crime, their involvement in conspiracy could be proved through Section 8 of Bharatiya Sakshya Vidhiniyam. सेतेबेले obviously 1999 रे judgment आसिला. They were referring to Section 10 of Indian Evidence Act. And this is very famous case, that is K.R. Singh and others versus Delhi administration. Okay. So this is assassination of PM. Okay. Indira Gandhi. So ये थिले ये K.R. Singh. So Indira Gandhi को assassination हला. There were 2 Sikh bodyguards जे ताको assassinate करथिले. जणो को सेठी on the spot अलगा security forces जो माने थिले से माने eliminate कर देले. आउ जणो को से सरेंडर कर दे संगे संग बंदूक तळे रखी हाथ ऊपर कर देला तो ताको मारलेनी. एंड सेठी आउ गोटे लोक थिला जे कि civilian staff थिला who was also involved. ठीक अछि. So this case related to that. Supreme Court discussed the application of Section 8 of BSA in detail, which is like Section 10, stating that the conduct of accused before
and after the commission of crime is relevant to prove the conspiracy. ठीक है. First जे मारला से तार पिस्टल रे बोधे गोटे कि दीटा एमती को गुली मारला, बट सेकंड जे मारला से तार जो स्टेन गन रे ओके से पूरा बहुत गुली मारदेला, राइट. So and then one was killed on the spot, other one he surrendered. See how अन्य तार colleagues मानु गुली गुली मान. ठीक है. So that was the thing. The case ta तारी ऊपर है. Okay. So conduct of the accused before and after the commission of crime is relevant to prove the conspiracy. Which later. So just take it down. Okay. Question section 8. 8 है important. These are the ingredients. Okay. Simple language लिखा है जहाँ लिखा है जो मैं bare act जहाँ लिखा है कि ताकू तो लिखियो बन्ना exam रे इमिति लिखियो रहा for anything. जहाँ आपण बुझिले ताकू एमती points और sub points रे divide करी कि ताकू लिखियो. Got it? So read yourself section 8 once. If you have any doubts, then you can ask me. सर सर ये जो पीडीएफ टा आपण कोथरो देखौचंदी से जो डीएसए रे जो लास्ट 2024 रे जो वीडियो वाला देखले एतरे जो पीडीएफ वाला को हाँ जो अवेलेबल अछि नवंबर बस सही गुड़ा ही मते एक्चुअली एते टाइम हे नी अपडेट करिया पई ताको नोट्स गुड़ा मुटिके ट्राई करूची मे बी सेक्शन 10 रो मुटिके अपडेटेड नोट्स टा यूज करिनी. Okay, because it takes a lot of time. तापरे मते थेरेपी पर होते टाइम होनी है फिर. But एगुड़ा भी more or less okay, it will do our work. हमें concept टा बुझिबा एग्जाम रे केमति लिखियो पड़िबो तापय हम गोटे रेडी रेफरेंस दरकार. कहीं ना बैरेक्टर जा अछि से लैंग्वेज रे मु तो केबे लिखि परिबि नै एग्जाम. ओके अब बहुत घोषाघोषी करे पड़ियो सेमिति भी रिक्वायरमेंट सेमिति भी न था. ओके तो एडा हला टू द पॉइंट परीक्षा रे एही लिखियार अछि. Okay, Ripal. So see anything you have, any doubts etc. you have, then you can tell me. Otherwise RB आउ कर दीटा जिनस देखियो. सर टिके ऊपर कोला बस जो की इंग्रेडिएंट्स जो अछि ऊपरटा Ingredients टा अछि. Done. आज्ञा सर. Okay. So how we get the points देखिबा related to हमरो section 8. Okay. Actually ये जो different dimensions हमें discuss करूछु. Okay. एगुडा basically कोन ना आपण various judgments of the Supreme Court ru जहाँ statute रे देछि ता देहरे आउरी points उडा add हे जाउछि. Okay. So take down आउ किछटा points एतरे आपण लिखि देबे. So state of Tamil Nadu versus Nalini, how KR Singh and others versus state. Edita just you can keep in mind. And I would have sensational cases. Okay, both related to assassination of prime ministers. Jone ex-prime minister thile, jetola assassinate hile, au jone serving prime minister thile, jetola assassinated. ठीक है. So next take down.
in next point, okay, in Yaqub Memon versus State of Maharashtra 2013, ये भी sensational case. You know about this case, Yaqub Memon. Who was this Yaqub Memon? Yaqub Memon versus State of Maharashtra 2012. Sir, Yakub? Memon, Memon, Yaqub Memon. He was one of the main accused of the Bombay blasts. Okay, Babri Masjid demolition पर એટલે Bombay blast करिका हैला. He was one of the key accused. Okay, and he was the only one who was sentenced to death. Okay, माने से जो main conspirators भितरे काहे ना दाऊद इब्राहिम तो खसी पड़ेला. Okay, आरटा भी से कौन आउट भी थिला जे तारा मेजर ये से भी खसी पड़ेला. ये ताकोरी family. Okay, and he was caught. ये जाउथिला ट्रेन धरिया पे कोन तो धराई गला. आर इन्वॉल्वमेंट यू नो एते बेसी मात्रा रे प्रूव ही परलानी. ठीक अछि ताकि ये ही करैछि नो मास्टरमाइंड तो पळै थिले तो ताको आज बंद धराई परले. ओके, जहाँ को धरले तो तारा यू नो केसेस ता अगेंस्ट केसेस को थोड़ा हैला एंड फाइनली ही वाज ओके हैंग टिल डेथ ताको फांसी दंड दिया हैला. राइट, तो एटा भी गोटे सेंसेशनल केस. So in the case of Yaqub Memon versus State of Maharashtra 2013, Supreme Court established that Section 10 of Indian Evidence Act, Section 10 of Indian Evidence Act, okay, that is Section 8 of BSA, provides unique and special rule of evidence okay, rules of evidence to be followed in case of conspiracy. Yes, the first point. Second point, once conditions given therein are fulfilled, statements made by one conspirator will be taken as evidence against all other co-conspirators. Statements made by one conspirator will be taken as evidence against all co-conspirators. So, a particular case रे कौन हैतला, he was not a mastermind. Mastermind तो दाऊद इब्राहिम थिला आउ से टाइगर मेमन थिला आरो भाई यार रिलेटिव. ओके, सी सब पळेले ये धरा पड़ियाला. ये he was not the mastermind, he plan करनथला. Okay, and he was well educated person, chartered accountant थिला. ओके, तो ता ऊपर कौन पड़ला ना से जो पैसा अरेंज हबो आरडीएक्स जो अणा हबो. ओके, जो पैसा अरेंज हबो तो he was involved in that handling of the financial aspect of the bombing. ठीक है, ता ऊपर सही allegations रहला. Right, so सी भी जेतले जाउथिला तो he was caught and सेतबळे गोटे टाडा, okay, terrorist and disruptive activities prevention act, which is a
गोटे एंटी टेरर लॉ सेटा चलुला आउ later on that was taken back. Okay, तापरे once he was found guilty, then ताको डेथ सेंटेंस दियाला आउ सुप्रीम कोर्ट को से पुनी तार अपील कला. ओके, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देले और मर्सी पिटिशंस तापरे बहुत देला. ठीक है, मर्सी पिटिशंस बोथ एट द स्टेट लेवल गवर्नर को एंड एट द सेंट्रल लेवल प्रेसिडेंट. ठीक है, एंड फाइनली ही वाज ताको फांसी दिया गला 2015 रे. ठीक है, सो एनीवे सेटा गोटे the way that was done सेटा गोटे जिंस वी कैन से बट सेतर मेसेजिंग भी थिला. ठीक है, lot of other things were there. For example, okay, 2007 रे ताको सेंटेंस कराइता डेथ को. तारा अपील उडा सुप्रीम कोर्ट ओके 2013 अराउंड सब रिजेक्ट कले और मर्सी पिटिशंस प्रेसिडेंट को पाखरे बहुत दिन पड़ी रहिला. राइट, unless the mercy petitions are disposed किछि करी हबन. But when the new government came 2014 रे okay, तो से they took action whatever से जाबि तका करे कथा कले सोडा मर्सी पिटिशन तारो सबु एग्जॉस्ट हे गला किबा आउ भी किछिटा बाट थिला. बट से माने कोन कले ना फाइनली जेतरे प्रेसिडेंट भी मना कर देले एंड ये जाउतला आउ गोटे मर्सी पिटिशन पई. सो ताकू से माने ता बर्थडे दिन ही फांसी दे देले जो दिन तार बर्थडे थिला. राइट, सो सेटा भी बहुत जन क्रिटिसाइज कले के भाई तुम 2 दिन अपेक्षा कर जे तो कोन होला लोकडा पळुतला कि पड़े. ओके, बट एनीवे सेटा तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट. लीगल साइड रो हमर कोन जानिबार अछि. ओके, लीगल साइड रो कोन हमको जानिबार अछि ना जा सुप्रीम कोर्ट एठी कहले जोटा आपण लिखि छथि. दैट इज द इंपोर्टेंट थिंग. ओके, कि जदि सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंडर रे गोटे कॉन्स्पिरेटर से ओके जहाँ भी एविडेंस से दोची स्टेटमेंट दोची that will be taken as evidence against all co-conspirators. ठीक है, बुझी परले पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु. इन द केस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एटा में सेक्शन 6 रे भी देखथिलु वर्सेस नवजोत संधू 2005. In the case of NCT of Delhi versus Navjot Sandhu 2005, Supreme Court established that statements made by conspirators after they are arrested are not admissible because by that time conspiracy would have ended. Arrest तो ही गला ना, conspiracy सॉरी गला तांकर. तो सेठी okay, statements made by conspirators after they are arrested, okay, that is not admissible. तमाने जो जिनसा कहला कि प्रथम थर जेतेबेले डिस्कशन होची ता परे ओके सब्सिक्वेंटली के कोन लिखिला कहला एकला सेही गुडा एडमिसिबल हो. ठीक है, बट आफ्टर अरेस्ट एटा तो स्टैट्यूटरी किछि दियाइन. तो एही पॉइंट्स गुडा हमको एग्जाम रे लिखिले फ्रॉम द केस लॉज you get better marks. Okay, statement made by conspirators after they are arrested are not admissible because by that time conspiracy would have ended. ठीक है, एटा NCT of Delhi versus Navjot Sandhu 2005 केस टा. एटा भी इंपोर्टेंट केस आगुरु भी आपण ताको देखछन. Got it? So now you read once आपण कोनटा लिखिले. Okay, whatever you have written just read once. Any doubt, anything you are unable to understand, then ask me, else we'll go to section 9.
बुझी पारले तो इफ यू आर नॉट सेइंग समथिंग ताले मु या बुझली कि आपण सब बुझिले बट एनीवे से डायरेक्टली निजे पढिबे सेतबेले भी जदि डाउट्स अछि डाउट्स एक्चुअली माने इट्स लाइक यू नो आपण पढितबे 10th स्टैंडर्ड रे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ओके डाउट्स आर लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट आपण जदि से डाउट किसी रखिले आगु को जो रिलेटेड कांसेप्ट जुड़ा सब हैरान हो सो डोंट कीप एनी डाउट्स राति गोटे रे बहुत पिला आपण राति रे पढंती किछि जण पठौचंती भी ओके सो किछि असुविधा नै मु भी सेमती वॉइस नोट्स जेतेबे मु करेक्शन करछि कोन करछि मते तो जेतेबे टाइम मिले मु सेति कोले वॉइस नोट पढे केबे केबे राति गोटे रे आपण वॉइस नोट जिवो सो डोंट टेक इट अदरवाइज ओके ना अदर टाइम मते न मिली पारे ठीक अछि सेमती आपण को जेबे डाउट हो यू कैन सेंड ए वॉइस नोट और यू कैन टाइप करियर देरी भी लागे ओके बेसी एफर्ट भी लागे ठीक अछि सो सेटा आपण कर दे पारे जेतल डाउट हो जस्ट क्लियर द डाउट इधर सेल्फ ओके जदि आपण एनालिसिस करिवे सेटा बेस्ट काइना आपण बहुत किछि सेते सिखि छिवे दा डाउट हो सेटा तो क्लियर हो एंसिलरी फैक्ट्स भी बहुत गुडे आपण पाइ छिवे सपोज मु आपण को ए दुटा केस कहली नलिनी रो ओके आउ से जो केयर सिंह यू मस्ट बी नोइंग दैट सेटा बहुत फेमस केस सेटा क्रिमिनल लॉ ओके किंबा केतेटा केस धरत आपण जानि नांती प्रथम थर मु कहली ओके याकूब मेमन केस द केस ता आपण जे तबरे पढिबे प्लस से सिचुएशन एंड ऑल सेगुडा भी पढिबे तले आपण कोन होलिस्टिक आईडिया हे जो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल कि मु आडू सेडा कह आई विल गिव यू द पॉइंटर्स देन यू नीड टू वर्क ऑन दोस पॉइंटर्स बुझि परले सो दिस इज बेसिकली योर section 8 now let us go to section 9 okay facts not otherwise relevant are relevant okay माने normally जो fact गुडा relevant नो सेगुडा भी relevant हे जिवो को condition रे दीटा condition कोच if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact in issue or relevant fact संगे जदि किछि inconsistency थिबो तार ताले से fact actually not relevant है not otherwise relevant but now it becomes relevant okay it is first answer second if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable माने हाई प्रोबेबिलिटी अछि कि फैक्ट इन इश्यू के रेलेवेंट फैक्ट एक्चुअली हेछि किंबा हाई प्रोबेबिलिटी अछि कि सेटा हेइ ठीक अछि ताहले ही जाय कि these facts which are not relevant okay they become relevant for example ते गोटे लोक कोटी गोटे he is accused of murdering a person let's say in place A ठीक अछि that the phone of the person say person is known not to leave his phone anywhere phone of the person से 2000 किलोमीटर दूर रे ट्रैकिंग होची और से गोटे बिल पे करिची ओके ऑफ ए वड़ा पाव फॉर एग्जांपल लेट्स से एंड ही इज नोन टू बी वेरी क्रेजी अबाउट वड़ा पाव ठीक अछि नॉर्मली मु जदी काटी देबी कि ता ऊपर यू नो ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर एट अनदर प्लेस 1000-2000 किलोमीटर दूर रे और एई फैक्ट पर जदी कहली से ताको वड़ा पाव भल लागे से वड़ा पाव क्रेडिट कार्ड रे पे कला एई जगह रे पे कला ओके फोन लोकेशन आया थिला पिन आसिला फोन को पिनटा देला क्रेडिट कार्ड रे तापर सेटा ट्रांजैक्शन ये हैला ता माने लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ठीक अछि बट इट इज नॉट रेलेवेंट टू द केस किसी 2000 किलोमीटर आगे ओके मर्डर करछि बट ताको से लिंक करा जाउछि फैक्ट्स बिकम रेलेवेंट बुझि परले सो दैट इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ सेक्शन 9 तार इलस्ट्रेशंस अपन देखंतु okay it has given you illustrations the question is whether A committed a crime at Chennai on a certain day the fact that on that day A was present at Ladakh is relevant ठीक है तो obviously से crime टा commit करि पर नथिबो ना the fact that near the time when the crime was committed A was at a distance from place where it was committed would rather render it highly improbable though not impossible that he committed is also relevant ता माने कोन से एरिया रे थिला सपोज से भद्रक रे हिची क्राइम टा आ ये लोक थिला यू नो कटक रे बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट देन हाईली इम्प्रोबेबल तो सेटा भी आरी अंडर रे जीवो ठीक अछि नेक्स्ट
आपन illustration देले the question is whether A committed a crime. The circumstances are such that crime must have been committed either by A, B, C, or D. Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C, D is relevant. Okay, elimination, rule of elimination. Okay, you know about this famous Arushi case, right? So, prosecution initially rule of elimination को देखिले घर बंद अच्छी ठीक अच्छे एंड से पेरेंट्स बाहर को जाइछन घरे विक्टिम अच्छी और ताका सर्वेंट अच्छी फोर्स्ड एंट्री रो कोठी भी प्रूफ मिलुनी ठीक अच्छे सो देन तो किए ही परिबो का पाखे चाबी अच्छी ये ही परिबन से तो फाइनली ये ही हेथिबो बुझि पाले सो बाय एलिमिनेशन इट इज डन सेटा से illustration B रे अपन कर कोच so you can take down inconsistency with facts in issue or relevant facts, probability or improbability of facts. Okay, A theta jinsa section 9. Okay, that is A theta tara basic jinsa jota apno ko jani bar ach. That is basically your section 9. Okay, not Indian Evidence Act, Bharatiya Sakshya Adhiniyam. ठीक अछि तो एटा हला सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट तो एथरे कोन ना अपन देखिले जो से एग्जांपल रे देला प्रथम इलस्ट्रेशन रे दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एलिबी ओके एलिबी कोन ना से टाइम रे आउ कोठी कोठी से थिला समवेयर एल्स ठीक अछि दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एलिबी तो एटा भी डायरेक्टली के क्वेश्चन पड़छि फ्री ऑफ एलिबी okay taro kemiti proof karibe and all these things okay that some points we will take down lekhile eta then RM Malkani versus state of Maharashtra सर गोटे सेकंड आउट टिके गोटे लास्ट टाइम खाली रह okay ठीक আছে দেখি এটা सेम जिंस जो डायरेक्ट लिखाई छि बट এটা जनरल इंग्लिश रे अछि जोटा एग्जाम रे में आराम रे लिखि परिबे we don't have to mug up the direct language done এটা section 9 of Indian Evidence Act ଦେଇଛି এটা Indian Evidence Act no section 9 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam so just write down the case names okay RM Malkani versus state of Maharashtra एतरे कोन हेतला admissibility of taped conversation in bribery case okay so एतरे Supreme Court कोन कहले it held that the taped conversation was relevant under section 9 okay as it made the existence of fact in issue that is the bribery highly probable ठीक है तापरे बोधराज alias Bodha and others versus state of Jammu and Kashmir 2002 ro identification of a dead body through various facts so the Supreme Court held that facts relating to identification of deceased was relevant under section 9 as they had made the existence of fact in issue that is the identity of the deceased highly probable okay देखिले okay so next लिखंतु से ये रही then we will do tomorrow
9 रो आउ दुटा पॉइंट्स हमको लिखिया पड़ियो जस्ट टेक डाउन ओके जोटा कि आपण देखुचंदी illustration 1 रे okay that is alibi so take down next point the plea of alibi ALIBI plea of alibi point 1 in Darshan Singh versus State of Punjab 2016 in Darshan Singh versus State of Punjab 2016 Supreme Court established that Darshan Singh versus State of Punjab 2016 Supreme Court established that plea of alibi taken by defense is required to be proved it is important okay is required to be proved only after prosecution has proved its case only after prosecution has proved its case against the accused only after prosecution has proved its case against the accused prosecution को प्रथम प्रूफ करिया पड़ियो सेटा ओके कि यू नो ताको केस जा अछि ए अक्यूज्ड आकु काई कि हमें भाबु एई करछि क्राइम टा ए सब एविडेंस अछि कोर्ट सेटा देखिला पर ता पर डिफेंस asi कहबो ओके अक्यूज से कहबो कि नाही आगे ए टाइम रे मु नथिली मु आ गुड जगह थिली एमती नो कि जस्ट खाली जेतरे प्रथम स्टार्ट हिची ओके ट्रायल टा आउ से ताको कहउछदी कि एई मर्डर टा करछि किछि बेसी प्रूफ भी से देना कि सेटा कोर्ट सामने रे ओके एस्टैब्लिश भी करना प्रोसिक्यूशन ये डेई के ऐसी कहबो ना मु सेते बळे एठी थिली सेट दिली दरकार नै कोर्ट सेटा ओके ये प्रूफ करि सरो आगे दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड राइट दैट plea of alibi taken by defense is required to be proved only after the only after the underline karantu prosecution has proved its case against the accused ठीक है next point in state of Maharashtra versus Narsingh Rao Pimple state of Maharashtra versus Narsingh Rao Pimple 1984 सर पिंपल PIMPLE Pimple सर पिंपल और माने सेटा महाराष्ट्रियन एसेंट रे कहले पिंपले ओके ठीक अछि सेमिति एक्सेंट रे कहले दा पिंपले राइट नरसिंह राव ओके पिंपले PIMPLE 1984 the Supreme Court established that a plea of alibi must be proved a plea of alibi must be proved with absolute certainty a plea of alibi must be proved with absolute certainty so as to completely exclude the possibility of the presence of the person concerned at the place of occurrence to completely exclude the possibility of the presence of the person concerned at the place of occurrence যদি আপনার आंसर लिखला मन पड़नी केस लॉटा ताले एटलिस्ट
जो पॉइंट से केस लॉ रे दिया है से पॉइंट खाली लिखि देबे केस लॉ जने मन पड़ले तो बहुत भलो बात हैला सो दिस इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ एलिबे ता माने पूरा 100% एब्सोल्यूट सर्टेनिटी थिबा दरकार जति मुझे एग्जांपल ता देली से पेमेंट करची गोटे खाइची कोन पेमेंट करची क्रेडिट कार्ड रे क्रेडिट कार्ड रो ओटीपी आछि तार माने लोकेशन ऑफ द फोन इज आल्सो ट्रेस्ड टू दैट होटल आउ क्राइम सीन 2000 किलोमीटर दूर रे अछि ओके बट सेही लोकटा करची कि नहीं सेटा केमती जानिबे तो सीसीटीवी ऑफ द होटल रे क्लियरली देखा होची सेही वस्तु से देखो सरला कथा ताले कंप्लीटली प्रूव्ड ओके ता माने सी आउ सेठी 2000 किलोमीटर क्राइम सीन रे ओके सेठी केबे भी नथिबो किंतु जदि से होटल रे सीसीटीवी नाही ओके फोन अछि फोन रे अपन क्रेडिट कार्ड रे पे हिची फोन रो लोकेशन भी होटल देखौची फोन को ओटीपी भी जाईची बट सेही लोकों की आउ काकू दे की पठे दीची सीआईटी रही गला फोन को आउ काकू दे पठे दला ताले कोन आउ सेठी जो वेटर माने आउ से माने ताकर मने नाही से माने कहि पारना की आस्तिला कोन दे डोंट रिमेंबर देन ताले probability high अछि but then we cannot say that 100% certainty जोटी एटा कोला absolute certainty सेटा करियो तो एठी हो plea of alibi सक्सेसफुल हेई परिबो नाही बुझि परले काई कि से कहि एटा ए पर्टिकुलर जगह राइट लास्ट पॉइंट लिखंतु similar judgment has been given in Somabhai versus State of Gujarat 1975. Similar judgment has been given in Somabhai versus State of Gujarat 1975, in which the Supreme Court has established that a plea of alibi has to be proved. A plea of alibi has to be proved to the satisfaction of the court. A plea of alibi has to be proved proved to the satisfaction of the court. Right? तर कोर्ट has to be completely satisfied माने पूरा एब्सोल्यूट सर्टेनिटी थिबा कथा माने आउ किछि प्रोबेबिलिटी रे आउ किछि चांस किछि नथिबा कथा कि अलगा जिंसटा भी हे पारे तो जो एग्जांपल टा मैं नेलु सेठी चांस अछि ओके खाली आपण लोकेशन टा देखौ जी ता फोन रो ता क्रेडिट कार्ड रो एडा सब बट ही मे हैव सेंट समवन एल्स सेटा एस्टैब्लिश हे परनी ताले एठी प्ली ऑफ एलिबी विल नॉट सक्सीड कुछ पहले सो विल स्टॉप हियर देन and काली मु सेक्शन 11 सरला परे then ଆମେ 10ଟା क्वेश्चंस ऊपर 10-15ଟା क्वेश्चंस okay that we will do okay so then we have to go to 10 okay and 11 then 11 then others also we can go through ei pdf ta you can just go through it ଆଉ ei cases गुडा भी जो देछि थरते भी आगुर टिके देखि देले then you can have okay a discussion about हे पर right for example this MC Mehta case that is very famous case okay से गुडा सब हमें आपण जेतले टॉट्स पढिबे and all generally भी case टा important okay तो से जो अग्रवाल रो बुकटा जा कबके नाही सेटा किनि देबे okay सामर्थ अग्रवाल तो ताको मझिरा मझिरा each class मु धर जहा हमरो रहउची relevant case law जोड़ा recent case law जोड़ा सोडा मुटिके डिस्कस कर देबे okay fine any doubts you are having then you can ask else we'll stop here okay fine so we'll stop then
tomorrow we'll continue जोटू चलो तीनटा जिंस कहिची से ଟିକେ देखिया भाई ओके से तीनटा जिंस फर्स्ट मते क्लास रे कहबे sometimes I forget okay you people should remember me before starting the class सेटा डिस्कशन करिकी क्लास टा स्टार्ट करले तो आपनकर भी overall you know knowledge base टा बढ़ियो okay so thank you Sir. नमस्कार हां Sir. कौन सर काली जो एग्जाम लॉन्ग क्वेश्चन टा देथिले सेटा जो तारा जो लास्ट जो डिफेंस जो पार्ट टा थिला तो सेटा मु गोटे माने ଆପଣ लिखिची टिके सा देख मते टिके देखियो पठेइछे मु डिफेंस पार्ट देखिछि हां मु देखि सेटा देइछि ठीक अछि सेटा सर डिफेंस जोड़ा लिखिची सेटा ऑलमोस्ट ठीक अछि तो किछ असुविधा नहीं मु मॉडल आंसर टा भी देई देबी ग्रुप रे तो ता संगे टिके मैच कर देबे ओके बट ओके ठीक अछि मोरलेस इट वाज फाइन जो माने पठो जंती किछि लेखि की इफ देयर इज एनी एरर ठीक है जदि आपण ओडे इनसे लिखिछे तो ओडे भूल अछि जोडा की करेक्टेड होबा दरकार ओके कि आपण पैटर्न टा एते ठीक नहीं ताहले मु आपण वॉइस नोट रे कहबी जो माने मॉडल आंसर देखि लिखछन्ती यू ऑलरेडी नो द पैटर्न आपण ठीक पैटर्न रे लिखिछन्ती ओके तो जनरली अनलेस देयर इज सम एरर टू बी करेक्टेड ओके तो मु ताको आ वॉइस नोट पठाइनी यदि वॉइस नोट पठाउनी मोर लेस आपण जनरली कि मु यू नो प्राइजा लिखिछु ठीक ठाक अछि ओके फाइन सो विल स्टॉप हियर देन नमस्कार विल मीट टुमारो Thank you, sir. Thank you, sir. नमस्कार सर